Hello and welcome. Assalamu alaikum to all my viewers, to my followers, to my friends who are watching us today. I'm Samira. As you all know, this is my business page. And again, I'm here with a wonderful guest today. First of all, a very good morning, good evening, good afternoon to all the people who are watching me. We are coming live again from Dubai. And today we are on the 12th of June 2021. Wow, it's amazing how the summer vacations are just on the way, and we are very excited for that. So again, let's introduce our guest for today. She's from Canada. She's Rabia Adil. Alhamdulillah, she is with us today, and she will be sharing her wonderful success journey with us. So Yes. hello Rabia, assalamu alaikum. Walaikum assalam. So thank you so much, Samira, for such a wonderful introduction, and good morning to everybody in Dubai. By the way, it's 11:16 p.m. in Calgary, Alberta. So, but this is weekend, and I'm usually awake at this time, so that's not a big deal, Samira. So yeah, I have been in Canada for 8 years. I've been doing this business for about a year now, and I'm a teacher, just like Samira. So I teach English to people who are newcomers to Canada, and then at the same time I started this business because That's there are lots of amazing. reasons. अमेजिंग तो हम तो एक्चुअली बहुत शुक्रगुजार है कि आप आज हमारे पेज में आए हैं। तो Thank you आपकी so जो much. सक्सेस स्टोरी है और आपके जो रीजंस बिहाइंड स्टार्टिंग एन ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस, वो हम आप व्यूअर्स को जरा बताइए। लाइक यू आर सेइंग यू आर अ टीचर बाय प्रोफेशन, यू हैव अ वेरी गुड बैकग्राउंड, बट देन अगेन यू ऑल्सो हैव टू वंडरफुल किड्स, फिर भी आपको हसल के लिए एक बिजनेस जो ऑनलाइन है, जिसमें स्कैम भी Exactly. हो सकते हैं या क्वेश्चन मार्क्स भी हो सकते हैं, फिर भी आपने ये चूज किया. सो व्हाट आर योर रीजंस, राबिया? May I honestly बताऊं, when everybody knows what happened in March 2020, right? When the whole world suddenly went into a lockdown, right? So that was honestly the first time in my whole life after getting married that I was spending time like freely with my children. You know, in those 2 weeks when everybody, like everything was shut down, we didn't know what would happen after those 2 weeks. I was having fun with my daughters. My daughters are right now 11 and 12 years old. So last year they were 10 and 11. And I baked with them, I cooked with them, and I just asked my husband, like, why can't my life be like that? Like, why do I have to, live with an alarm clock? And I've been doing it for such a long time. Like, I'm literally done with it. So at that time, and interestingly, at that time, I was not doing only one teaching job, I was actually doing two teaching jobs. So luckily, I was looking for business. Literally, I started looking into businesses. And why online business? Because of course, even at that time, you could clearly see that physical businesses were just closed up. Like due to pandemic, everything closed down. Right? Physical businesses are opening now after 1 year. So I thought I want to do something where I don't have to go physically, where I don't have to sign in, I don't have to sign out. I work on my own terms. I work when I feel like working. It should be my own. No answers, no deadline. मुझे कोई ये पूछने वाला नहीं हो कि आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, because it should be something that is of my own. You know what I mean? Or plus, मैं like honestly, my daughters, I feel like now they are growing into young women and they are going to be my best friends. So अगर मैंने ये time ये jobs करने में गुजार दिया ना, तो फिर I will miss this. Like I'm always gonna miss this precious time because they share with me their dramas at school, their the friends fights, then getting back on those fights, and फिर उन किसी के साथ मिलना ही नहीं है, किसी के साथ बिल्कुल नहीं मिलना, कोई पीछे पड़ गया, अम्मा उससे जान छुड़ा दो, कैसे उसको क्या बोलूं. So I just want to be with my children. Honestly, I just want to enjoy this life with my children. और ये मुझे honestly last year ही realize हुआ कि मैं कितना कुछ अपनी life में miss कर रही थी. अमेजिंग राबिया, आपकी जो स्टोरी है वो इतनी रेसोनेट करती है मेरे स्टोरी के साथ. मेरे भी दो बेटियां हैं, और ये जो लास्ट ईयर आप बता रहे हैं कि हमने पैंडेमिक के टाइम में और भी बहुत क्लोजर महसूस किया है. लाइक दे आर डूइंग ऑनलाइन इन द हाउस. आई वाज आल्सो डूइंग ऑनलाइन एजुकेशन इन माय हाउस, इवन दो दिस ईयर आई हैव टू गो टू स्कूल. But in those days we cooked so many meals together. I know. बहुत सारे बेकिंग किया है और जितने सारे कुकीज और केक्स बनाया है. इवन माय वेट आल्सो इंक्रीज.
but we enjoyed. Even I learned with my daughters like how to draw and sketch in a very competitive way, because so one of my daughters वो बहुत अच्छी है drawing में, तो Oh, हम wow. लोग मिल के बहुत सारे कलर पेन्स निकाल के जब भी इवनिंग के टाइम पे बैठ के हम ड्राइंग करते थे, सो दैट वाज आल्सो क्वाइट अमेजिंग. और जैसे आपने कहा यही लास्ट ईयर जब मैंने भी इसी टाइम पे मैंने स्टार्ट किया है. सो पैंडेमिक के टाइम में जैसे मेरा बेटा माय एल्डेस्ट सन वो ही वाज इन ग्रेड 12, तो उसके बाद तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी है, एंड द यूनिवर्सिटीज एज यू नो एजुकेशन इज क्वाइट एक्सपेंसिव. तो उनके लिए बेस्ट एजुकेशन मॉम्स के हर एक की ख्वाहिश होती है. तो मैंने भी सोचा है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस जब हो ही रहा है तो फिर कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करे, राइट. तो मैंने भी यही देखा कि एक टीचिंग प्रोफेशन के साथ और क्या कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स इट शुड बी समथिंग फ्लेक्सिबल. तो प्लस समीरा हमें पता ही नहीं कब हम अपनी जॉब लूज कर देंगे. लाइक मेरी अपनी वर्क प्लेस इन लास्ट 3 years वी हैव लॉस्ट ओवर 10 टीचर्स. लाइक आपको नहीं पता, आप एक फियर में हो कि कब आपकी जॉब चली जाए, यू नो व्हाट आई मीन. तो वो एक ये फियर के साथ रहना भी इज वेरी स्ट्रेसफुल. यू हैव अ जॉब, दैट्स गुड, ऑफ कोर्स यू शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ने हमें जॉब्स दी हैं. लेकिन आई फेल्ट ऑनेस्टली ग्रेट जिस दिन मैंने अपनी इवनिंग जॉब पे खुद क्विट किया था ना. आई फेल्ट सो ग्रेट. इस बिजनेस को शुरू करने के बाद मैंने कभी थैंक यू, मैं 2 जॉब्स नहीं करना चाहती, ठीक है ना. तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी. And now I'm really waiting कि मेरा business, like alhamdulillah it's doing great, and when it takes up like even higher than this, मैं अपनी morning की भी छोड़ देना चाहती हूँ. Like I have no wish कि मैं सुबह alarm clock पे उठूँ और सारा दिन, you know. And teacher is a 24/7 teacher, you know. It's not a teacher for 4 hours or 8 hours. आप सारा वक्त ही teacher हो. Absolutely. Yeah. So definitely. Weekend में भी हम काम ही करते रहते हैं, right? I know. It's not that we are desperate when we come back home. Even dreams भी वही आते हैं. कोई फेल हो गया, कोई पास. Don't say that. हाँ, dreams भी कभी-कभी आ ही जाते हैं. कोई ये सबमिशन बाकी है या कल कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो फिर वो ड्रीम्स में भी थोड़ी सी आ ही जाते हैं. What a pressure. Exactly. तो basically राबिया, जैसे हम सोचते हैं कि हमने ये प्लान बी के लिए स्टार्ट किया है या अर्ली रिटायरमेंट के लिए, तो हमारे जो ये बिजनेस की स्पेशल इफेक्ट्स क्या है, स्पेशलिटी क्या है कि यही हमने चूज किया है. जैसे बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, बट व्हाई डिड वी चूज दिस? व्हाट इज सो अमेजिंग इन दिस? मुझे जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस, क्योंकि जाहिर है मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. ऑनलाइन में क्या किसी बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट. तो ये मुझे बात बहुत लाइक दिस वाज द फर्स्ट वेरी अमेजिंग थिंग. सेकंड ये था कि इसमें ट्रेनिंग अवेलेबल थी, और पर्टिकुलरली वो इसी बिजनेस की ट्रेनिंग है, यानी कि वो जेनेरिक ट्रेनिंग नहीं है कि आप जाएं जी खुद ही यूट्यूब पे ये डालें जो आपने समझना है, तो 10,000 वीडियोस निकल आएंगे और आपको समझ नहीं आ रहा कि विच वीडियो यू रियली वांट टू वॉच एंड विच वीडियो विल एक्चुअली गेट यू व्हाट यू रियली वांट. सो हमारी जो बिजनेस ट्रेनिंग है वो जो लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उन्होंने बनाई है. सो बेसिकली दे आर लाइक 10 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट की. द पॉइंट दैट यू वांट टू लर्न, इट टेक्स यू राइट देयर, you learn it and you apply it and bada bang bada boom, you're good, right? Plus आपके पास कोच है, आपके पास मेंटोर है. अब हम दोनों पहली बार बात कर रहे हैं and we are connecting with each other just because of this business. तो ये बहुत एक अच्छी बात है. like it's global, like 87,000 people हो गए हमारे private Facebook group में. Did you see that? तो आप you can reach out to people, like मैं sometime पाकिस्तानी लोगों को reach out करती हूँ, but Indian लोगों को भी reach out करेंगे यार कि तुम्हारा बड़ा अच्छा जा रहा है, कैसे कर रहे हो. And people help each other because this business is all about, you know, support, community support, training support. Like but these are the things that really got me in, honestly. कि मैं इसको like उन लोगों से सीखूंगी जो ऑलरेडी कर रहे हैं, instead of, you know, figuring it out myself. क्योंकि अगर मैं खुद ढूंढना शुरू करूंगी और लर्न करने की कोशिश करूंगी, that might take me years and I might end up getting nothing. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. Yeah, excellent. What you have said, it is completely resonating with me. Here we have Lubna Muhammad. She's sending us salam. Alaikum assalam, Lubna Muhammad. She is basically my sister. She's watching from UAE, and wow, okay. she sent her wishes to you. Hi, Rabia. Thank you, Lubna. Hi. I hope you're doing fine.
थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग अस हियर राबिया। जैसे राबिया ने बताया है कि हमारे ट्रेनिंग सिस्टम भी बहुत अमेजिंग है। जैसे कि हमारे पास बहुत प्लेटफॉर्म्स है। वी हैव फेसबुक, वी हैव यूट्यूब, पिंटरेस्ट एक्सेट्रा। वी हैव लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वी हैव अ चॉइस। तो कौन सी ऐसी बिजनेस है जहाँ पे हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हमें चूज करने की दे गिव दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी कैन जस्ट चूज वन प्लेटफॉर्म एंड गो व्हाट इज एक्चुअली बेनिफिशियल टू अस। सम ऑफ द व्यूअर्स वो पूछते हैं कि हम जो है लाइव नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम ये बिजनेस ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू बी watching behind the fences. So you have anything to tell to them, like, is live important for our business? What do you देखिए, think? live one of the things in live is that we want to let people know that Rabia is a real person, Samira is a real person, we are not fake people. Everybody knows nowadays there are so many scams out there, right? Which Yes. we don't even know who are running those scams, right? आप उनके Facebook page पे जाएंगे तो कोई कार्टून सा बना होएगा, आप you can't really see if this is a real person or not. So go live is not an essential part of the business. आप नहीं करना चाहते तो it's not as important. ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने गो लाइव ही करना है तो आपका बिजनेस चलेगा. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर नॉट डूइंग गो लाइव्स और उनका बिजनेस बहुत जबरदस्त जा रहा है. ठीक है ना? तो वो बहुत सारे लोग हैं जो गो लाइव्स नहीं करते. इट्स नॉट an essential part. There are some people like me and Samira, we want to go out and we feel the need कि भी यार हम women को motivate करें, mothers को motivate करें, जो औरतें घर से रोजाना निकल रही हैं और काम कर रही हैं, like there is a choice. तो we just kind of हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और गो लाइव्स करते हैं उनको इनकरेज करने के लिए कि यार हम लोग कर रहे हैं तो तुम लोग भी कर सकते हो. So it's just like that, but I would still say कि people should not think कि भी वो गो लाइव नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस ही नहीं चलेगा. It's not like that. It can definitely. जैसे आपने बताया है कि रियल पर्सन, तो हमारे जो बिजनेस है यहाँ पे पीपल, amazing people all over the globe hai, and all are real people from different backgrounds. Like you are a teacher, I am a teacher, okay, that is one thing, but there are busy moms, there are different professionals, doctors, business women, और जिनकी जॉब भी नहीं है, पार्ट टाइम जॉब्स, कोई भी आ सकते हैं. और यहाँ की जो क्राइटेरिया है, इट इज वेरी वेरी लिमिटेड एंड वेरी मिनिमम. हमें सिर्फ एक वाईफाई चाहिए होता है, which can be in our mobile phones or it can be in our laptops. और दूसरी जो चीज हमारे पास होनी है, you should know at least basic English, right? Basic English, because the training videos they are in English. But of course, जैसे आपको भी पता होगा कि हमारे जो ट्रेनिंग वीडियोस है, now we are giving them option for different other languages, है ना? जैसे कहा कि फ्रेंच और मे बी इन हिंदी also it is going to get translated soon. तो वो options भी available है. And क्या बोलते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट, राइट? बस एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए. और कोई भी एक्चुअली बिजनेस कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, साइड हसल भी कर सकते हैं, या फुल टाइम भी कर सकते हैं. और जैसे कि हमारे अपडेशंस होते हैं मास्टरमाइंड्स में, आपके राय में ये कैसी है, ये मास्टरमाइंड्स क्या होती है? आप व्यूअर्स को जरा बताइए. देखो, mastermind is something that like for example, I'm doing this business and since we are using social media platforms, right? So social media platforms इस तरह हैं कि they are changing every day. Like there are different changes going on in the advertisement, the way they govern. Like आप Facebook देख लो, Instagram देख लो, changes आ रही हैं, हर दिन changes आ रही हैं, right? So I think masterminds are the best way, to stay in touch with the latest trends. Again, masterminds पे वो लोग आते हैं जो बहुत successful होते हैं. Again, वो हमको टिप्स बताते हैं what worked for them. अभी जो recent mastermind, I don't know Samira if you saw that or not, but वो that woman was from Burma. उसने इंग्लिश में भी नहीं किया अपना एडवर्टाइजमेंट, उसने बर्मीज में किया, अपनी लैंग्वेज में किया, and today she is at the highest rank. ठीक है ना? वो उसी एड की वजह से जो उसकी अपनी लैंग्वेज में था, she is at the highest rank in our business. You know what I mean? So it's not like that. The very important thing I think in this business is, do you really want to change in your life? Do you really want to support yourself? Do you really want to make some extra income? Do you really want to support your kids' future? Because ये business, maybe हम तो एक दिन चले ही जाएंगे, तो business will stay there. Our kids can do this business.
they can benefit from this business. Like ये तो it's something, business is not something for a certain period of time कि 1 साल के लिए मैं business करूँगी, 2 साल के लिए करूँगी. It stays there with you, right? And this is how this business is. So I think masterminds तो बहुत ही जबरदस्त हैं. Every week we get to see a successful person, and from that successful person, it again gives us motivation. It again gives us courage कि यार ये बंदी कर सकती है, जो कि again घर में ही बैठी हुई थी, and she just started it out, and today she's at the highest rank in a year or two. So why can't we be there? You know, it's like that. So I think they're very motivated. Fine. Yeah, I'm very very honored कि आप आज मेरे पेज में आके आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है व्यूअर्स को. तो एक लास्ट टिप और एक लास्ट एडवाइस आप उन लोगों के लिए, स्पेशली जो यानी कि फेंस में बैठ के सोच रहे कि ये बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनके लिए एक छोटा सा एडवाइस, एक ब्यूटीफुल मैसेज. What I would say to the fence sitter is कि आप जैसे हम बोलते हैं ना कि the grass is always greener on the other side, कि वॉल की दूसरी साइड पे, हाँ क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो वो ग्रीन ही होगी, ठीक है ना. तो आप एक बार वॉल पे चढ़ के तो देखें, हो सकता है वो वाकई ग्रीन हो फ्रॉम योर साइड. नो, हम बहुत सारी चीजें इसलिए इग्नोर करते हैं कि हमें नहीं पता ना. भाई मैंने कभी ऑनलाइन बिजनेस किया नहीं यार, मुझे तो आता ही नहीं, व्हाट इफ आई फेल्ड, यू नो, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. तो आपको भी पता है कि हमारे बिजनेस में देयर इज अ रिस्क फ्री गारंटी ऑफ 30 days. आप नहीं करना चाहते हैं बिजनेस, बट एटलीस्ट लुक इनटू इट. लाइक आप नहीं करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज लाइक गो बैक टू समीरा एंड टेल कि नहीं समीरा मुझे नहीं करना है, जस्ट यू नो I want to back out, and you can back out within 30 days. So वो उस तरह का कोई चीज नहीं कि हम आपको पकड़ लेंगे कि oh no, and since you have joined this business you cannot get out of it. Of course it's all your choice. ये it's business की beauty ये है कि it's your business. You decide what you want to do. If you don't want to do it, again it's your choice. And if you want to do it, if you want to explore it, आपको एक बार explore जरूर करना चाहिए कि what is the potential in this business. ठीक है ना. अगर आपको वो आकर लगता है कि नहीं नहीं नहीं, this is not something I would like to do, yeah, back out. What's the problem with that? सो जैसे कि हमारे लाइव वेबिनार्स होते हैं ट्यूसडेज एंड थर्सडेज को, तो अगर आप रजिस्टर करते हैं या तो राबिया की साइट में या मेरे वेबसाइट में, वी विल सेंड यू द सेम इंफॉर्मेशन इन योर ईमेल. तो आप वो 90-minute वेबिनार जो है पूरा देख के फिर आप सोच सकते हैं कि आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है. बट ऑफ कोर्स गेनिंग नॉलेज अबाउट द ऑनलाइन वर्ल्ड, इट इज समथिंग of no loss, and it is a no cost workshop. So we are giving you this opportunity. Maybe this opportunity will not be there later on. So do look into it. And I think it is the best time, as the world is going global and everything is getting into the online space, to look for a new opportunity or a plan B, just in case you would like to make a change in life for your family or for your own self. Then this is a good opportunity. So one thing I would like to add here, for so many people, for all Samira's viewers, and even I don't know whether my viewers are here or not, but for all Samira's viewers and the people who are just thinking about it, there are so many people who started this business out as a plan B, and today it's their plan A. In a year or two, it became their plan A. They quit their jobs and now they're doing it full time, because nobody would want to, you know, live a scheduled life. Everybody would want to work on their own terms. People want to travel. People want to spend time with their children. People want to make memories. आपकी jobs ये सब चीजें नहीं करने देती हैं आपको, ठीक है ना. तो बहुत सारे लोग हैं, इवन मैंने भी plan B के तौर पे start किया, but I know soon it will be my plan A. I would not want to go to my role. So उसके बारे में future सोचें कि इसमें potential क्या है. वाओ राबिया, थैंक यू. जैसे आप अभी बताया है कि ये प्लान बी से प्लान होने का भी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत फ्यूचर में इसकी बहुत ज्यादा लोगों के लिए है. बहुत हम रोजाना ही एक दिन में कोई पोस्ट देखते हैं, जॉब क्विटर, वो लोग जॉब छोड़ देते हैं. Job quitters daily, and our team is also getting so widened up from in the beginning when I joined, it was so small, but now it is more than 87K, I guess, and it is increasing daily. We cannot just keep the count. So friends, do look into it and contact us. Keep connected and stay safe and stay blessed. Ravi, again, thank you so much. I won't be taking much of your time. I know it's time for you to sleep and all. And anyway, have a good night's sleep. Sweet dreams to you also, and my blessings to everyone in Canada and everyone in UAE.
Thank you Thank you so so much. much for joining. Thank you. Bye. Bye, everyone. Bye.